तो हम बात कर रहे थे इस क्वोशंट स्पेस की, V by W. Now W is a subspace and this is collection of sets which we called cosets. It is of V plus W, where V belongs to V and we denote it by V bar. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V bar such that V belongs to V. Now हम दिखाना चाहते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है, ये सेट वेक्टर स्पेस बनाता है, where बेसिकली ओके हाँ यहाँ पर ये भी है कि V बार तुम्हें हमेशा समझना है, इट इज V प्लस W. नाउ इसमें ऑपरेशंस कैसे डिफाइंड है, हम लेते हैं दो कोसेट्स V1 प्लस W प्लस V2 प्लस W. इसको हम डिफाइन करते हैं अनदर कोसेट V1 प्लस V2 प्लस W एंड देन अल्फा इंटू V1 प्लस W जो भी है, इसको हम डिफाइन करते हैं ये कोसेट अल्फा V1 प्लस W. तो इसको मैंने फर्स्ट कहा था, अब मैंने दो प्रॉपर्टीज दिखाई थी. अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैंने क्या कहा था, मैंने कहा W जो है वो V by W में बिलोंग करता है, बिकॉज W कैन बी रिटन एज जीरो, आई कैन राइट इट एज जीरो के ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कैन राइट इट एज जीरो प्लस W एंड जीरो डज बिलोंग टू V, सो देयरफॉर दिस बिलोंग्स टू V by W. एंड हमने ये देखा भाई अभी जो हमने किया V plus W plus W is equal to V plus W, right? So, and similarly, W plus V plus W is equal to V plus W for all V plus W belonging to V by W. So it implies that W is the additive identity of V by W, and we denote it by हम इसको डिनोट करते हैं भाई जीरो बार. जीरो बार का मतलब W, जिस तरह से जिसे हमने V बार लिखा इन प्लेस ऑफ V प्लस W, ताकि हमारा टाइम थोड़ा बचे. तो इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, और ये हम कर चुके हैं क्योंकि ये कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये क्लियर है यहाँ पे, इट एक्चुअली मीन्स दैट V बार प्लस जीरो बार इज इक्वल टू V. सो दैट इज हमने ऊपर क्लियर किया प्रूव, V बार प्लस जीरो बार इज इक्वल टू V बार विच इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो बार प्लस V बार. तो वही है ना एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन. अब चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स. चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स ये है, वो ये है क्या होगा. now for every V bar equal to V plus W belonging to this quotient space V by W, minus V plus W also belongs to V by W. क्यों? क्योंकि V अगर V में है, it implies that minus V भी V में है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है. तो अगर माइनस V V में है तो माइनस V प्लस W एक कोसेट बनाएगा जो V by W में होगा, एंड V प्लस W, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस V बार, एंड V बार प्लस माइनस V बार इज इक्वल टू V प्लस W प्लस माइनस V प्लस W. For using the vector space operation, one, this is actually V plus minus V plus W, which is equal to 0 plus W, which is equal to W, which is equal to
0 bar. Oh, sorry, W लिखा है. It is 0 bar. So, and similarly, V minus V bar plus V bar is equal to 0 bar. So therefore, every V bar belonging to V by W has an additive कौन सा माइनस V bar which belongs to V by W. तो तुम्हें याद रखना है जब भी मैं कहता हूँ V bar उसका मतलब खाली होता है V को W ऐड करना. ओके, इसी तरह से एबिलियन पांचवी प्रॉपर्टी. Now if I take V1 bar V2 bar belonging to V by W, it implies that V1 bar plus V2 bar is equal to V1 plus W by definition plus V2 plus W, but by definition this is V1 plus V2 plus W, but I can write this as V2 plus V1 क्योंकि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, they commute, you know, V1 V2 reason है belongs to V and V is a vector space, therefore it's an additive abelian group. So but that means it is equal to V2 plus W plus V1 plus W by first. यहाँ पे हम लिख सकते हैं by first. Now, but then this is actually V2 bar plus V1 bar. तो ये commute करते हैं. So therefore that is V by W is an additive abelian group. जरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे ये भी कर सकते हैं, हमने वेक्टर एडिशन पे फोकस किया. Now, if V bar belongs to V by W, if I take a scalar, let's call it C. मैंने अल्फा लिखा था ऊपर, मैंने ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया था? हाँ, अल्फा लिखा था, अल्फा कोई बात. Let's call it alpha. Now alpha V bar is equal to alpha into V plus W, which is equal to alpha V plus W, right? Now this belongs to V by W because alpha V belongs to V for all, अच्छा यहाँ लिख लो, and alpha belongs to F. For all alpha belonging to F, it is closed with respect to scalar multiplication. अगर ये V में है तो ये V by W में है. So therefore V by W is closed with respect to scalar multiplication. And the properties, and alpha into V1 bar plus V2 bar बराबर होगा alpha into V1 plus W plus V2 plus W. That would be alpha into V1 plus V2 plus W. And reason इसके लिए है by first. Or that would be alpha into V1 plus V2 plus W by second. But that can be written as कैसे? Alpha V1 plus alpha V2 because vector space operations जो हम ऊपर कर चुके हैं,
but that would be alpha v1 plus w plus alpha v2, sorry, अल्फा v2 प्लस w वो भी होगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे हम by first, but by second this is actually alpha into v1 w plus alpha into v2 plus w. This is by second. वही हम करते जाएंगे. तो okay, but that is equal to alpha into v1 bar plus alpha into v2 bar. यानी that is यहाँ है alpha into v1 bar plus v2 bar is equal to, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. अब तुम्हें तीन और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है, दिखानी है, बट डू इट योरसेल्फ. होम असाइनमेंट है कंप्लीट द प्रूफ. इसमें तीन और प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें देखनी है वेक्टर स्पेस की, और उसको यही फर्स्ट एंड सेकंड जैसे हमने यूज किया और वेक्टर स्पेस ऑपरेशन यूज किए, तो वो तुम्हें करना है. So now what do I have? I've got a vector space. I've got a subspace. Of a vector space over some field F, and I get V by W, which is इससे मैंने एक और वेक्टर स्पेस बनाई जो मैंने ऊपर वेरीफाई की. हाँ, दो तीन सिंपल प्रॉपर्टीज तुम करोगे ओवर द सेम फील्ड है. तो अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसकी कोई बेसिस होगी, और अगर अगर V फाइनाइट डायमेंशनल है तो ऑफ कोर्स अगर V फाइनाइट डायमेंशनल है तो ऑफ कोर्स W भी फाइनाइट डायमेंशनल होगी, उसकी भी कोई डायमेंशन होगी. तो हम दिखाएंगे V बाई डब्ल्यू की भी, मतलब इवेलुएट करेंगे हम इसकी डायमेंशन क्या होगी और उसका कनेक्शन क्या होगा इनकी डायमेंशन के साथ. एक्चुअली हम ये दिखाएंगे इसकी डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W. तो बिफोर दैट हम थोड़ा सा एक चीज और करेंगे. हमने पहले वो लेमा मैंने तुम्हें बोला था V प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू W if and only if V belongs to W. किया था ना मैंने एक साइड दिखाया था, दूसरा भी इजी है, वो तुम खुद करो. लेकिन मैंने अब इसका मैंने एक सिंबल दिया था, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस वेक्टर स्पेस V by W. तो इसको मैंने डिनोट किया बाय O बार, राइट. ठीक है ना. तो इसका मतलब इसका नाम क्या था, V बार. सो V बार इज इक्वल टू O बार if and only if V belongs to W. तो अगर V ये VW में है तो V बार O बार हो, यानी ये जीरो हो जाएगा. जीरो कहाँ का, अपनी वेक्टर स्पेस, वहां ओरिजिन, वहां उसका एडिटिव आइडेंटिटी. तो अगर VW में है तो V प्लस डब्ल्यू इज W, लेकिन जब मैं इसको बार में लिखूंगा तो V बार इज इक्वल टू जीरो बार इफ एंड ओनली इफ V बिलोंग्स टू W. ये तुम्हें याद रखना है क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा हमें नेक्स्ट थ्योरम. So let me write down this theorem. If P is a होम असाइनमेंट सारे के सारे करना क्योंकि वो तुम्हें जल्दी सबमिट करने हैं, उसके मार्क्स हैं. डायमेंशनल वेक्टर स्पेस and if W is a subspace of V, then dimension of the quotient space V by W, collection of cosets, is actually equal to dimension of V minus dimension of W. तो ये हमें प्रूव करना.
तो प्रूफ इसका ये है, नाउ वी नो दैट, ये हमें पता ही है, हर सब स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की फाइनाइट डायमेंशन में होगी. वी नो दैट W is also finite dimensional. एंड हमें ये भी पता है इसकी डायमेंशन पूरी स्पेस से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि स्पेसिस जो होती है, इट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. तो ये हमें पता है. सो लेट डायमेंशन ऑफ V be equal to n and dimension of W be equal to m. ठीक है, ऑफ कोर्स देन इसका मतलब ये भी है m must be at most n. नाउ लेट, अगर इसकी डायमेंशन m है w की, तो उसकी बेसिस में m एलिमेंट्स होंगे. सो लेट w1 w2 up to wm be a basis of w. तो इसकी एक बेसिस होगी, उसमें m एलिमेंट्स होंगे, मान लो ये है. तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब w1 wm एक तो इसका सबसेट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैनिंग है. बेसिस के लिए ये है कंडीशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पैन. सो इट implies that w1 up to wm is a linearly independent subset of w, but that implies, now since w is a subspace, therefore a subset of V, implies that w1 up to wm is a linearly independent subset of V. तो हमें पता है इसमें अगर ये लीनियरली सबसेट ऑफ V है, तो इसको मैं कुछ वेक्टर्स और ऐड करके V की बेसिस बना सकता हूँ. एंड therefore it can be extended, इसको बढ़ा के हम बेसिस बना सकते हैं, to a basis of V. से मान लो ये इसकी मैंने एक बेसिस बना दी, इसको मैंने कुछ और वेक्टर्स जोड़ दिए, तो w1 up to wm तो थे ही, इसमें मैंने कुछ और वेक्टर्स ऐड किए. लेट्स कॉल देम v1, vr. अब ये जो ये है, ये बेसिस है, ये सेट है बेसिस ऑफ v. और v की डायमेंशन क्या है, मैंने लिया है डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n. तो इसमें n एलिमेंट्स होने चाहिए. सो देयरफॉर इसके जो एलिमेंट्स है m प्लस r, दिस मस्ट बी इक्वल टू n. ठीक है, m plus r must be equal to n. Let's call this 1, right? Now now v1 bar, v2 bar, vr bar, they belong to v by w, है ना? Because v1, v2, vr जो है ये v के एलिमेंट्स है. इसका मतलब हुआ v1 plus w, v2 plus w, और इसी तरह से ये होंगे v by w में. बट इसी का नाम तो v1 बार है, इसी का नाम तो v2 बार है, तो ये बिलोंग करेंगे v by w. तो वी क्लेम दैट, हमारा क्लेम ये है, दिस v1 बार
ये ना मैंने इससे जो कोसेट्स जनरेट करे, इस जो हमने ऐड किया V1 बार, V2 बार up to VR bar is a basis of V by W. तो अब हमें प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये स्पैनिंग है, ठीक है? So let V be any vector belonging to V. It implies that V can be written as, अब इसकी बेसिस मैंने अभी V की बेसिस कौन सी है? V की बेसिस है W1 up to Wm and V1 up to Vr. तो ये बेसिस है V की। अगर बेसिस है तो इसका कोई भी वेक्टर होगा इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन, बिकॉज बेसिस स्पैन्स द वेक्टर स्पेस. तो V then can be written as some C1 W1 plus C2 W2 plus so on and so forth up to C M WM. फिर मैं लिख सकता हूँ plus D1 V1 plus so on and so forth plus dr VR, where Ci and dj, they belong to my scalar field F for all I running from 1 to M and j running from 1 to R. So because it is a basis, so it can be written as a linear combination of the basis vectors. Now I want to see जो इससे कोसेट जनरेट हो. Now V bar जो है, that is an arbitrary element of V by W. It can then be written as, of course V को हम लिखेंगे इस तरह से C1 W1 plus so on and so forth plus Cm Wm, okay, plus D1 V1 plus so on and so forth plus dr Vr plus W. ये मैंने V को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया सिंपली यहाँ से, but that is equal to C1 W1 plus Cm Wm using the operation. मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ plus W plus ये D's को मैं अलग करूंगा D1 V1 plus dr Vr plus W. Now we know that this is just 0 bar plus D1 V1 plus so on and so forth dr Vr plus W. रीजन क्या लिखेंगे हम? बिकॉज ये W के अंदर है, ये सारे वेक्टर जो है ना ये W में है, और अगर W को W से ऐड करेंगे बड़े W से, तो रीजन लिखेंगे हम सिंस V इक्वल टू या U इक्वल टू C1 W1 plus CR CM WM. This belongs to W क्योंकि ये वहाँ की बेसिस है. It implies that this U plus W is equal to W, which is equal to 0 bar. तो 0 के ऐड करने से कोई नहीं फर्क पड़ता. So I can write it as D1 V1 plus dr Vr plus W. But that can be written as जो इसके operations define है D1 into V1 plus W plus so on and so forth plus dr into Vr plus W. But that is equal to D1 V1 bar plus D2 इसी तरह से कहीं पे होगा D2 V2 bar plus dr Vr bar, क्योंकि इसका नाम ही है Vr. So this is V bar is equal to this. So it implies that now for every V bar belonging to
V पे W can be written as a linear combination of V1 bar up to VR bar. So which implies that what? Which implies that it is spanning. It implies that V1 bar, comma V2 bar, whatever we set है up to VR bar, spans V पे W. Now, अब हमें दिखाना एक्चुअली लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाया तो ये बेसिस बन जाएगी. Now, to show that this is linearly independent, let इसकी कोई लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो दिखाएंगे, फिर देखेंगे वो सारे के सारे जीरो. सो इसका मतलब लेट D1 V1 बार प्लस D2 V2 बार. लेकिन यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ ये जीरो है, तो यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है इसकी कोई लीनियर कॉम्बिनेशन को मैं जीरो कर देता हूँ, लेकिन वो जीरो बार होगा जो ना इसकी एडिटिव आइडेंटिटी. सो दैट इज इक्वल टू एक्चुअली W. ये तुम्हें ध्यान रखना, इसका मतलब W है. Where of course D1, D2 up to DR are some scalars. हमें दिखाना ये सारे के सारे स्केलर्स जीरो होने चाहिए. कैसे होंगे? और लेट्स सी. बट इट इम्प्लाइज दैट अगर ये W है ना, it implies that actually D1 into V1 plus W plus D2 into V2 plus W plus up to so on and so forth, dr into VR plus W is equal to W. But this can be written as, कैसे करेंगे हम? It means that D1 V1 plus W, जो ना इसके बाइनरी ऑपरेशंस जो हमने डिफाइन किए थे ऊपर या पहले वाले लेक्चर में, प्लस dr VR plus W, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन इज इक्वल टू W. वेक्टर एडिशन का मतलब ये हुआ कि D1 V1 plus D2 V2 plus so on and so forth, dr VR plus W is equal to W. अब हम यूज करेंगे जो मैंने पहले वो कराया था, वो छोटा सा रिजल्ट कि V plus W is equal to W if and only if V belongs to W. तो इसका मतलब ये हुआ अगर this plus W W है, तो इसका मतलब ये वेक्टर W में होना चाहिए. It implies D1 V1 plus D2 V2 plus so on and so forth, dr VR, ये जो वेक्टर है, this must lie inside W. लेकिन हमने इसकी बेसिस ढूंढी है. W की बेसिस क्या है? W की बेसिस है वो W1 W2 Wm. So it implies that D1 V1 plus D2 V2 plus so on and so forth, dr VR, ये बराबर होना चाहिए सम C1 W1 plus C2 W2 plus so on and so forth, CM WM, for some Cj belonging to F. J runs from 1 to n. और रीजन क्या है इसका? रीजन ये है, यहाँ पे तुम इसको रीजन लिख सकते हो, W1 Wm is a basis of W. तो अगर ऐसा है तो every vector inside W, in particular this vector, can be written as a linear combinations of Wi. तो वही हमने यहाँ लिखा कि I have written it as a linear combination. But this implies अगर ये इसके बराबर है D1 V1 plus D2 V2 plus so on and so forth,
dr plus minus C1 W1 plus minus C2 W2 plus so on and so forth minus Cm Wm plus this linear combination is 0 क्योंकि मैंने इसको अब शिफ्ट किया दूसरे साइड बट हमें पता है हमने खुद ही भी लिखा है ऊपर कि W1 अप टू Wm और V1 इसके साथ जब हमने जोड़े थे ये Vr is a basis of V and hence linearly independent. और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये सारे के सारे स्केलर जीरो होंगे डीज भी और सीज भी लेकिन मुझे सिर्फ ये चाहिए कि डी जीरो होंगे इट इम्प्लाइज दैट d1 is equal to d2 is equal to dr is equal to 0 and of course also c1 is equal to वो हमें चाहिए नहीं वो क्यों नहीं चाहिए क्योंकि मुझे दिखाना था ये जो है अगर ये जीरो है तो ये सारे के सारे डी जीरो है लीनियर डिपेंडेंस के लिए तो हैंस तो मुझे चाहिए था it implies that it implies what it implies that v1 bar v2 bar up to vr bar is linearly independent और स्पैनिंग हम पहले ही दिखा चुके हैं hence v1 bar v2 bar comma so on and so forth vr bar is a basis of p by w अब बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही होती है डायमेंशन इसका मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ b by w इज इक्वल टू r और लेकिन अगर तुमने ऊपर देखा था हमने ऊपर लिखा है कहीं पे b प्लस आर इज इक्वल टू n सो r इज इक्वल टू n माइनस b तो मैंने क्या किया b प्लस आर नहीं था m प्लस आर सो इट इज n माइनस m यहाँ मैं लिखता हूँ n प्लस नहीं m प्लस आर हमने लिया है ऊपर शायद उसका नाम 1 रखा है हमने इज इक्वल टू n सो ये जो r है ये बराबर होगा n माइनस m और अगर तुम ऊपर फिर से देखोगे दिस इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन w सो दैट फिनिशेस ओवर ये क्वोशंट स्पेसेस के बारे में जो हम पढ़ रहे थे कि क्वोशंट स्पेस है जिसको हमने किया v by w इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स तो इसमें जो मैंने एक दो होम छोटे असाइनमेंट्स दिए वो भी तुम करोगे राइट और मैं इसको आज यही छोड़ता हूँ कल हम इससे आगे जाएंगे लेट मी व्हाइट बोर्ड सभी सो रहे हैं कि